Hello friends, welcome to SSP Math. Today we will take problems on vector identities. In last video already vector identities covered. So first problem is show that f bar equal to r square into r bar is irrotational. Obtain the scalar potential associated with it. Means if we know that if f bar is irrotational, then there exists scalar point function phi such that f bar equal to del phi. So using that we have to find also scalar point function. So first we have to show that f bar is irrotational. So when f bar is irrotational, if del cross f bar equal to 0, and given that here f bar equal to r square into r bar, means f bar is given in terms of Ra. So if we take LHS, means we have to prove that here del cross f bar equal to 0, and if we get del cross f bar equal to 0, then we can say that f bar is irrotational. So LHS is del cross f bar can be written as equal to del cross r square into r bar. Again same as last video, we already solved such type of problem. Del cross r square into r bar. R square is scalar quantity, this is phi, and r bar is vector quantity, this is u bar. So using again second identity, del cross phi u bar, we know that this identity del cross phi u bar can be written as del phi cross u bar plus phi into del cross u bar. So we have to use this here. Phi is scalar, r bar is vector. So del cross, this can be written as del phi. Del phi means del r square cross r bar plus phi. Phi is r square into del cross r bar. Okay. So what is del r square? Del r square is 2r, means derivative of r square is 2r into del r cross r bar plus r square into del cross r bar, we know that 0. Del cross r bar means curl of r bar is 0, is equal to 2r into what is the value of del r? Del r is r bar upon r. देखो ये del r, del cross r bar all problem में आ रहे, plus r square into 0 is 0. Okay, so this r get cancelled, 2 into r bar cross r bar, and we know that r bar cross r bar is 0. So therefore we get here del cross f bar equal to 0, and if del cross f bar equal to 0, then we can say that f bar is irrotational vector field. Now we have to find scalar point function phi. Now how we find scalar point function phi? अब तक हमने phi के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 dy फ्री फ्रॉम x plus integration of f3 dz free from x and y plus constant of integration. That formula is not applicable here because f bar is given in terms of r, that is r square into r bar given है. So f bar is not given in terms of x y z. तो वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आया था? उसके लिए पहले फॉर्मूला ऐसा था, एक डी फाई इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार. ओके, एंड इसको इंटीग्रेट करके हमने वो फॉर्मूला यूज किया था. सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला हियर, डी फाई इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार. नाउ व्हाट इज एफ बार? एफ बार गिवन है हियर आर स्क्वायर इंटू आर बार डॉट डी आर बार, एंड वन स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगेन आर बार डॉट डी आर बार कैन बी रिटर्न एज आर इंटू डी आर. यू रिमेंबर दिस. ओके, जिसको प्रूफ चाहिए वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है. आर बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू आर इंटू डी आर. सो इफ यू पुट हियर देन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर. आर डी आर किसकी वैल्यू आई? आर बार डॉट डी आर बार की. सो आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब डी आर. ओके, मीन्स डी फाई जो है, डी फाई आया हमारा आर क्यूब डी आर, एंड व्हाट वी वांट फाई. सो व्हेन वी गेट फाई, इफ यू टेक integration, so integrate here. What is integration of d phi? That is phi. Integration of r cube is r raised to 4 by 4 plus constant of integration c. So this is the scalar point function phi. Okay, now we will take next problem. Next problem is that is today's second problem. Identity show that del square of f of r is equal to f double dash of r plus 2 by r into f dash of r. So this is standard result. For solving other problems we have to use this. Del square of f of r is equal to f double dash of r plus 2 by r into f dash of r. Now let's start solution of this. So del square of f of r can be written as del square. How we write? Del is
scalar function, but del square is del dot del. Okay, if you find del dot del means if you take dot product with it is itself, that is del square. Del square can be written as del dot del of f of r. Okay, now how we write del of f of r? Solve here one by one. That is del dot del of f of r is f dash of r into del r equal to del dot f dash of r into del r is r bar upon r. Okay, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल डॉट स्केलर क्वांटिटी है एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर इंटू आर बार. मीन्स ये क्या हो गया डेल डॉट फाई यू बार. एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर ये हो गया फाई एंड ये वेक्टर क्वांटिटी ये हो गई यू बार. सो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1 डेल डॉट फाई यू बार कैन बी रिटर्न एज डेल फाई. डेल फाई मीन्स डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर डॉट आर बार प्लस फाई. फाई क्या है एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर इंटू डेल डॉट आर बार. ओके, डेल डॉट यू बार. नाउ हाउ वी फाइंड डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर? सो दिस इज here, observe this, f dash of r is scalar, r is also scalar, so del of u by v means del of u by v. del is differential operator, vector differential operator means simple derivative है. तो यहाँ पर हमें u अपॉन v रूल यूज करना है बिकॉज दोनों क्या है स्केलर है. और डेल ऑफ u बाई v क्या आता है v इंटू सेम एज u बाई v रूल v दैट इज r इंटू डेल ऑफ f डैश ऑफ r. ओके, म्हणजे v इंटू derivative of u minus u that is f dash of r as it is into del r divided by क्या होता है v square. v square मीन्स यहाँ पर आएगा r square dot r bar plus f dash of r upon r into del dot r bar की वैल्यू क्या है 3. ओके, इज इक्वल टू नाउ ये सॉल्व करना है r इंटू डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर. डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर मीन्स इसका डेरिवेटिव हेयर ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव लिया तो सेकंड टाइम हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ आर इंटू डेल आर आएगा. ओके, माइनस एफ डैश ऑफ आर इंटू डेल आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर राइट डेल आर एज इट इज. ओके, वी विल टेक कॉमन दैट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डॉट आर बार प्लस 3 इंटू एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर. ओके, नाउ यहाँ से डेल आर कॉमन लो एंड डेल आर की वैल्यू आर बार अपॉन आर पुट करो और न्यूमरेटर इफ यू स्प्लिट न्यूमरेटर फर्स्ट एंड देन टेक डेल आर कॉमन. देखो ये आर आर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर रहा एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर, एक आर रहेगा माइनस डेल आर में कॉमन ले रहा हूँ एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर. ओके, इनटू डेल आर की वैल्यू आई आर बार अपॉन आर, ये डेल आर बाहर लिया डॉट आर बार प्लस 3 इंटू एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से मैंने क्या किया इस डेल आर को बाहर लिया एंड न्यूमरेटर स्प्लिट किया. अब देखो यहाँ पर आर बार डॉट आर बार होता है आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पर क्या आएगा डायरेक्टली लिखता हूँ आर स्क्वायर अपॉन आर आएगा. यहाँ पर आर बार डॉट आर बार की वैल्यू होती है आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर अपॉन आर क्या होगा वो होगा आर मीन्स इसको मल्टीपल है आर. ये आर यदि मैंने इनसाइड लिया तो यहाँ पर ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा मीन्स एफ डबल डैश ऑफ आर रहेगा माइनस यहाँ पर आर आता है ये एंड ये आर स्क्वायर है. सो 1 आर गेट कैंसल एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर एंड प्लस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर. सो 3 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर माइनस एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, ये क्या हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2 दैट इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2 बाय आर इंटू एफ डैश ऑफ आर. सो दिस शोज दैट del square of f of r is equal to f double dash of r plus 2 by r into f dash of r. Okay, in next video we will take remaining problems on vector identity. If you really like our video then subscribe the channel. Thank you.